Namaskar, Swagatam. We would like to welcome you all on our Ayush Samriddhi's journey of brainstorming, knowledge sharing, and a blessing to senior generation for next gen, and a suggestion from junior generation to senior generation also. So very unique topics, unique experts. We are discussing from our last 2 or 3 webinars. We are discussing on wish or upavish of Ayurveda. So the Mahavish, which is called VATSANABH, and in Ayurveda we call that Mahavish. In Unani Buchnak, they are also considering it poisonous, but unfortunately or fortunately that has not been banned in that way in which opium and hemp has been. So I would like to request Professor Vishnu Prasad Sharma ji, for he was the head of the Kai Chikitsa and principal, and then president of Vishwa Ayurveda Parishad Assam. I would like to welcome him first and would like to request him for his welcome address for audience and expert speakers. Welcome, sir. Okay, thank you, respected Professor V.K. Agnihotri ji, respected Dr. Pawan Kumar Sharma ji. Namaskar, good evening to everybody. I welcome all the distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen, to this evening webinar on VATSANABH, the best antipyretic. In this evening webinar, we have eminent speaker, Dr. P. Jeyaprakash Narayanan from CHENNAI, Dr. P. Mallikarjuna Rao, Dr. Mohd, Masihuzzaman, Dr. Pradeep. So I welcome all the eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar on VATSANABH, the best antipyretic. Once again, I welcome all of you. Thank you. Namaskar. Over to Pawanji. Namaskar. Thank you, sir. Thank you very much. Now I would like to request Professor V.K. Agnihotri ji for his initial words, and then we will invite Dr. Mallikarjuna Rao ji. Agnihotri. Namaskar, thank you. A very good evening to all the dignitaries, our respecters, and all guest speakers. I think 3 out of 4 guest speakers have already joined. So I welcome from the platform of our IRES, and the factor which we are going to take today. We are meeting for 417th time today, and as per Dr. Pawan Sharma ji's information, we are going to talk on VATSANABH. We all know that as it is the Mahavish and a very strong, fast and spontaneous action poison, that too in a herb form. It's a natural product and herb form. Of course, it is not available so easily. Its general distribution is at about 10,000 feet and above. So this VATSANABH is well used in Sanjeevani, which is the safest and foremost tool of our Ayurvedic system of medicine as far as the clinical therapeutic use is concerned. So today we are going to listen a lot of more and more information regarding the Aconitum ferox wild or Aconitum ferox Indian, whatever the species are there. Though its a simple name is VATSANABH, so its shape resembles like the navi of the goat. VATSANABH name is called in that way. But as far as its alkaloids are concerned and the active ingredients are concerned, it is most popular for its
now as a diaphoretic benefit, along with the Malasak as a rejuvenating or rasayan. So today's topic is very vital, and I do hope that our guest speakers might have informed to the his disciples, his near and dear persons concerned, so that they will be joining in the due course of time, and we will be going to benefit it with all the surface and deepest informations regarding the Vasanav. So with these few initial words, I welcome all the guest speakers along with our dignitaries who has ornamented today's webinar's platform. So we are just going to listen, and we will not like to waste any minute in this connection. So over to Dr. Pawan Sharma for further proceedings. Thank you. Thank you, sir. आप सर म्यूट हैं डॉक्टर पवन शर्मा जी. Thank you, sir. Thank you very much. So now, without wasting much time, I would like to request P. Mallikarjuna Rao. Welcome, Dr. P. Mallikarjuna Rao. He is expert on Dravyaguna and has blessed the platform previously. Yes, sir, I am here. Welcome, Dr. P. Mallikarjuna Rao. Welcome. Sir, may I request you, please, can you share my PPT? I have shared you in WhatsApp because there is some technical issue in my laptop, so I couldn't get in time. I request you, please, sir. No problem. In the meantime, please continue. I am downloading. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. Namaste. I am Dr. Mallikarjuna speaking. So today, our given topic is VATSANABH, the best antipyretic drug in Ayurvedic Materia Medica. So first of all, I thank Dr. P. Jeyaprakash Narayanan sir, Dr. Ansari sir, Dr. Pradeep sir, Dr. Vishnu Prasad Sharma sir, from Madan Tangavali sir, and Professor Dr. Agadatantra sir, and Dr. Pawan Kumar sir, especially for giving me this opportunity to talk on this topic and spare this platform for me. So, VATSANABH, it is titled as Visha. In our Ayurvedic literature, we have, am I audible, sir? Clear. Sir, am I audible, sir? Loud and Thank clear. you, sir. Because yes, sir. Thank you, sir. So, in our literature, we have three Vishas in our Ayurvedic literature by name Visha, Ativisha, and Prativisha. So, by name, we can come to a conclusion that the Visha is Aconitum ferox, Ativisha is Aconitum chasmentum as per their botanical source, and as per the literature we have so far. And there is another drug, Prativisha, which may be taken as antidote for Aconitum ferox. So the title is given for this Aconitum palmentum, which belongs, all these three belongs to Ranunculaceae family. There are many more comes under Aconitum species, various species in the genus, but the Prativisha might be considered as antidote for Visha, Aconitum ferox. That's what we are discussing today. And if we see about various synonyms of aconite, it is named as sweet poison. When we go through the history about, there is a famous novel which is written by Shakespeare, Romeo and Juliet. The novel was closed. I mean, when you see the end part of this novel, Romeo and Juliet both commit suicide, and they use aconite for their for death. For they decided to suicide, and they both take this powder, the powder of this root, aconite root, and it was mixed in gunpowder. I mean, the gunpowder which is mixed in first bolus of rice, and later they
that is how they took aconite for suicide purpose. So what I want to tell you is the aconite is an ideal suicidal drug because it won't create much disturbance for the purpose to solve the purpose. So that's the reason this is named as sweet poison, and this is also called wolf's bane. So this particular name is given to aconite because it is very common in European countries in that days, in olden days. Even till date, it is very common in European countries as there is the soil which is very suitable for the growth of this particular Ranunculaceae family members because the soil will be some slope like soil which is rocky and with smooth clay. So all these things helps for cultivation of this European this Ranunculaceae family members, and among them the European countries, wolves are very common in those days. These wolves are very fond of having these roots, the roots of tuberous roots of VATSANABH. So because they had these roots, the wolves number have been come down. So it banned the wolves. That's why this is titled as wolf's bane, and it is very common known as aconite. The root of VATSANABH is known very common as aconite root, and monkshood is also a very common used name for VATSANABH because if you see the flower of aconite, the flower looks the hood of monks, Buddhist monks. So in that way, it is very popular as with these names. So the drug is, as I said, it is very popular suicidal poison. There is possible with criminal. It is as a cattle poison, as I said, it is wolf's bane, and it is also used as abortifacient too in good olden days, and it is also used as arrow poison. The hunters who use arrows for hunting purpose, hunting of animals, they smear the aconite tincture and they use before for hunting purpose. So it is called arrow poison, and it is accidental poisoning is also happens because the tuberous root of VATSANABH looks the vegetable tuberous roots of tapioca root as well, the root which is common we use as a leaf vegetable. So accidental poisoning is also do happen with VATSANABH. In our literature, Susruta says the 4 varieties of in most of Nigantus also these 4 varieties of VATSANABH is explained based on the color of the tuberous root. The tuberous root is the tuberous root which is Panduvarnam in nature, Panduvarnam in color, I mean the very pale yellow will be considered as Brahmana variety of VATSANABH, that is known for its rasayana property. They differ in their property also. And red variety of tuberous root VATSANABH is considered as a Kshatriya variety, and this gives Deha Pushti, and Vaishya variety will be yellow color, and this is common use. This variety is used for skin diseases, Kushtagnam, and the black variety is considered as Shudra variety. This is very good aphrodisiac, Dhatu Karakam. So in that way, the 4 varieties of VATSANABH have been mentioned in our classics, most of the Nigantus also. So after under says Rajanigantu. Similarly, this is a very popular reference about VATSANABH that Sindhuvara Sadrushapatro VATSANABHyakrutistadha yet parshve nataro vruddhihi VATSANABH sabhashitaha. It is said, this is a keen observation to understand that our authors and various authors of Nigantus
have that much keen observation about plants. So if we see the second line of this stanza, this reference, yet parshve nataro vruddhihi, this is its prabhav of Vasanava, that it won't allow other trees to grow high, which means that parshve nataro vruddhihi, it always used to grow in the open grounds, and it won't grow under the shade of a tree. In another way, it won't allow other surrounding plants to grow higher than Vasanava. So in that way, Vasanava usually we cannot find out in a shade of any trees. So this is how Bhav Prakasha highlighted. Vasanabhyakrutis tada. It is said Vasanabi means one should consider Amlekas, but here it is commented that the K.C. Chunekar commented that it is not the umbilical cord of cow, but it is cow's udder. If we see, the tuberous root will have the similar shape, U-shaped or cow's udder shaped, Gostanakaran. And the leaves looks Sindhuvara Sadrusha Patru. The leaves usually resembles with Nirgundi leaves. Sindhuvara is a synonym for Nirgundi. So like how the pentafoliate leaf of Nirgundi, similarly this leaves also will have many lobulated leaves as well. In outright, I can tell you the leaves are almost resemble with the leaves of coriander leaves, which is very known for us. And this is about how to identify the plant when we go to the field. And Rasavagbhata says he says about Vasanabhyantu Panduram, Vasanabha will be Panduvarnam in color. So that can be considered the best among the 4 varieties, which is mild yellow in color. If we see the morphology of the plant, this is a very small herbaceous plant. This is annual. Sometimes it is also grows as a perennial plant also. Usually, when the flowers comes within very short, the tuberous root of this plant will grow its full vegetation, and after that, the tuberous root, whatever stored by the plant, will be used back, so that the tuberous root will shrink down. So that's the time where the flowers fade off and falls down of the plant. The tuberous roots must be collected. So Rasatarangini author says about the time of collection of the tuberous root. Sita samaye vasanteva samaharanam purna viryat tadanimasyeti bhavaha. This is the best time for collection of our roots during the Sita Samaya. I mean, usually it comes between December to April. During this period, Vasanava will be more potent. So that is the time for collection of the tuberous roots. And the fruit of the flowers are usually by flowers we can identify this plant. The flowers will have helmet-shaped flowers, usually blue color, and there are pale blue color is also available. And various other varieties of aconite will have white, even rose red flowers also there. But Aconitum ferox will be blue color flowers and helmet shape. This is why this tuberous root is named as man's food. And the fruit is follicle fruit. The seeds usually very small fruit, very small seeds, just like our tila seed. And this is very fragile part of the plant as well the tuberous root. So plant distribution can be easily done by the seed of aconite, Vasanava. Even the root, tuberous root also can be used for propagation of the plant. The tuberous root is optional part in this plant. The tuberous roots usually ellipsoidal shaped and 3 to 4 inches long, 1 to 5 centimeters thickness, and usually the bark of the tuberous root, I mean the skin of the tuberous root, will be pale brown color. And when you break open
it will be pale yellow. I mean, Pandu Varnam, the fleshy part or starch part of the tuberous root will looks pale yellow color. That's why Vasanabhyantu Panduram can be applicable for the innermost starch of the tuberous root should look pale yellow in color, not just the tuberous root. So that is how the presentation of the plant, as well the collection of the tuberous root, the season when to collect. And when we consider the chemical composition of the tuberous root, it is rich in aconitin. Aconitin is the marker compound of the Vasanabha. Pseudoaconitin, which counters the aconitin unwanted effects or excess when we use Vasanabha in excess. So pseudoaconitin counters the aconitin properties and pharmacological actions. As well, it is also found catecholamines. Few of the catecholamines are which are acting on parasympathetic nervous system, and quaternary ammonium compounds, isoquinolones. These are very common found. There are many chemical compounds are not yet found. And the pharmacological action, pharmacodynamics of Vasanabha was mentioned in classics, that the tuberous root is Madhura Tikta Kashaya Rasas, and it is mild pungent at the end. And Guna, it is Roksha, Tikshna, Lagu, Vyavayi, and Vikashi. Because of all these qualities, Roksha, Tikshna, Lagu, Vyavayi, Vikashi, all these qualities will enhance the action. Because of these qualities, it spreads very fast. Ashu Gunam is also there. Of course, all the poisons will move very fast in body because of Lagu and Ashu qualities. Vyavayi, Vikashi qualities also helps free movement or easy movement, fast movement in body. It is Ushnavirya Dravyam as well. It is Madhura Vipakam. It is a mistake here in this presentation. Please forgive me. It is Madhura Vipaka Dravyam. And if we see the mode of action of the tuberous root, initially the tuberous root stimulates the sensory nerve endings and causes tingling sensation when it is applied externally. As well, when we consume, we may feel the tingling sensation on the tongue and oral cavity. Total oral mucosa will have tingling sensation when it will be just like when we have pipali. We may feel the tingling sensation on the oral cavity. Similarly, such tingling can be felt, and it causes same effect on motor nerve endings and center of medulla and spinal cord. It depresses the cardiac muscle and reduces the tonicity, and finally it acts on sodium channels of cell membranes and tissues, including myocardial nerves and muscles. Because of these reasons, it depresses the functioning of heart. So it is known cardiac poison, and it is also mild poisonous to nervous system also. It is known neurotoxic and cardiotoxic. And the fall of temperature is very common found, or very particularly found with aconite when we consume or when it is given. The temperature falls down because the initial increase of dissipation from the gastric and flush. This is the reason body temperature falls down when aconite is used. Cardiac stroke volume comes down because the muscle tone of cardiac muscles comes down. The body supply to peripheries, peripheral organs to brain, kidneys will get reduced. So the circulation reduces, and there will be mild congestion at the heart. If it is not treated in time, it may causes
cardiac arrest also. It depresses brain as the peripheral circulation comes down. There will be congestion, as I said, in the heart, and the depression of brain due to less circulation, where thereby the hypothalamus also gets depressed and produces sweat, profuse sweat. So because of sweat, the body temperature will falls down. Sometimes patient may also complains the chills. So this is the mode of action of aconite when it is consumed, and how the body temperature falls down, and patient also feels palpitations, especially the very initially patient feels palpitations, and then there will be profuse sweat. So because of sweat, Sveda Jananam, the bodily temperature will comes down, and chills. So this is the mode of action of aconite when it is given. And there are broad spectrum actions mentioned for exhibited by aconite. If we see as per Ayurvedic literature, so far whatever we come across, it is Tridosha Shamakam, it is Rasayanam, Pranahanam, Devayi, Brahmanam, Devam Pachanam, Lihagam. It is used in all spleen and liver disorders. Swasakasaharam is Vataraktaram, used in Gaudiya arthritis. It is Gulmagnam, Stagdan, Pandurvagnam, Imiranashanam. It is used in Amavata, Shubdam, Natandharam, Shulagnam. Shulagnam is very prominent. Vikasi, Yogavani enhances the qualities of the is the combination of the body causes vision सर मल्लिकार्जुन जी आपकी आवाज नहीं आ रही. There is some glitch in the connection or network speed is slow. No, आप म्यूट हो गए मल्लिकार्जुन जी. Kindly unmute yourself. Yes. Am I audible, sir? Yes. Okay. Thank you, sir. And sir, just when we have disconnected, sir? Okay, may I know, sir? After explanation, actions. Karma. Sveda Janana property is very prominent for Vasanabha. The remaining other are Samanya karmas of Vasanabha. Even Rasayana quality of also is very prominent future for Vasanabha. And actions after indications, if we see it have similarly broad spectrum indications are found with Vasanabha. It is very common indicated in most of the fevers, various types, all the types of fevers. Shirashula, Naktanditvam, blindness, Abhishandam, conjunctivitis, Kushta, Krimi, Prameham, Archas, Kamala, Pandu, Vataraktam and Amavatam, Udara, Timira, Karnashula, Sirashula, Gridrasi Vatam, Vatarogas, all Vatarogas, this drug can be used as it is Valium and counters Vata, and it is used in Katishula, Mushika Visha, it is also used in rat bite fever, Mushika Visha, Vrushika Visha, scorpion bite also, Swasakasa and Sannipata Jwaram, even chronic fevers is very common used. As per homeopathy medicine, with various concentration, it is very common used for anxiety and acute fever
sudden fever, anxiety. This is the drug of anxiety in homeopathy, as well acute fever and acute urinary tract infections also, cystitis and urinary tract infections also. Aconitum napellus is very commonly used. This is that much very potent drug, Aconitum napellus. I come to know that few pharmacies are preparing our Mrityunjaya instead using aconite and purification, because the aconite what we get in market must be purified. So instead purification methods and all, they straight away take homeopathy medicine, aconite napellus, and making Mrityunjaya. This is something interesting what I come to know for making our Mrityunjaya combination. What they use is aconitum 200 power. Aconitum napellus is only 30 power. Aconitum 200 is very little less concentrated to aconitum 30 napellus, which is used in anxiety. And Mrityunjaya for making purpose, usually aconitum napellus 200 mg is used. So this is one thing I come across when I search the information data for to collect the data. And the dosage of VATSANABH, as per Rasavagbhata says, Tilam dadyat vishaschacha. Aconite must be given at the dose of tila by weight, which comes approximately 20 mg around. And the use of VATSANABH is it is usually come between 25 mg. Dose is 1 to 2 grams, and fatal period is 1 to 4 hours. So that's about the dose of VATSANABH. Dose is very particular. It can be less than 60 mg and less than 125 mg. Beyond that, it is really fatal. So every time VATSANABH will be purified and can be used. And there are many Vishishta yogas where VATSANABH is the prominent, the main ingredient is Yugonakirtiras, Anandaras, Kapakirtiras, Tamra Parpati, Putapakko Vishamajurantakaloham, Mrityunjayaras, Sanjeevani Vati, Vilishwaras, Jwaramrari, Ramabhas, and Saubhagyashundiras. These all are very common used in various fevers. Ananda Bhairavaras is very common used for Jwaratisaram, where fever is associated. Is very known formula. Whoever come across fever for 1 month history and excited to Anonari, Putapakko Vishamajantakaloham is the remedy, drug of the choice. And Mrityunjaya is very common used for seasonal fevers. Sanjeevani Vati, where a very clear recipe, Visishtam of aconite, VATSANABH. Tankana Basmam. Tankana is known antidote for VATSANABH. This recipe, this particular recipe, Sanjeevani Vati, Tankana Basmam is not found. So this is very common, very known recipe of VATSANABH, Sanjeevani Vati. Hello, Mallikarjuna ji. Your voice is not coming. Sir, here is two. Yes, sir. Am I audible now, sir? Yes. Yes, sir. Here it is heavy rain, so there is no proper signal. Now, am I audible, sir? So, Yes. Sanjeevani Vati, okay. Sanjeevani Vati is a very peculiar recipe where Tankana Basmam is absent in the recipe, and Jwaramurari, Ramabhanas, Saubhagyashundiras, which is used in Sutika Paricharya. So, in that way, I could give the
proper drug review and listed red listed plants by Botanical Survey of India in 2016, if I am wrong. Aconite stands in the second place. The drug which is listed in red listed plants, it means the plant is going to extinct in the near future. So something actions must be taken to prevent the endangership of the plants. And the market samples of VATSANABH, when we see, there are in our classics also it is said the 4 varieties, Pita variety, Krishna variety. So as I understood, on the based on the samples available in the market, this is the tuberous root. The tuberous roots, various stages of tuberous roots might be considered. That when we uproot the plant, and if you see the tuberous root, it will be brown in color or pale yellow, and when we break open, the starch also looks pale yellow color. But the tuberous root is Madhur Rasa and starch rich tuberous root. So it is very common pest infestation, creamy. So to prevent that, the herb sellers usually dips in the mustard oil, Sarshapatailam, and then it is after getting dry, the tuberous root is dipped in mustard oil, so that because of the mustard oil application, it turns black. This is what I could observe. And for proper drying purpose, usually if it is the tuberous root is considerable stout, it is chopped into slices and then it is dried. This also is another presentation of market samples of VATSANABH. And there are many Ekamulika Prayogas mentioned in various classics. Which is well known to all. Let me conclude all these Ekamulika Prayogas. In Jwaram, Mrityunjayaras is given with lukewarm water. In Kasaswasa, Anandabhairavarasa is given with honey as an upanam. In Vishamajwaram or chronic fevers, Putapakva Vishamajvarantaloham is given with honey. And in Puchikadamstram, VATSANABH kalkam is applied locally so that it pacifies the pain and the inflammatory signs and symptoms. And Shirashula, like migraine headaches, VATSANABH is on forehead. So this in anxiety and stress in homeopathy, as I said, aconitum 30 power is given internally to induce narcosis. This drug, raw drug, without purification, within 125 mg dose is usually given for to induce a narcoanalysis in forensic laboratories. So now let us discuss about VATSANABH Visha Lakshanas when it is given higher dose or not purified properly. The drug VATSANABH causes the symptoms. The symptoms usually mimics like shock, where the peripheral circulation will be reduced, peripheral circulatory failure usually observed, because of which the symptoms like decreased heart rate, pulse rate, and cold extremities, sore throat, vomitings, and pain abdomen usually is the prominent symptoms. And heart rate is usually falls down, and palpitations is very common complaint by the patient, and there will be hypotension, arrhythmia, shock, coma, and death. If it is not properly diagnosed by these symptoms, and poisonous symptoms of VATSANABH may lead to shock, coma, and death. So because of these reasons, it is known as cardiac poison. As far as Susruta, VATSANABH poisonous symptoms will happen in 8 stages, where the stage-wise development of
Vishakta Lakshanas of Vasanabha has been mentioned. So all these stages, if we observe, initially it causes the skin rashes and then tremors, burning sensation all over body, and may cause deformity, may cause, in fifth stage, there will be phenodgamam, the patient will vomit froth, and in a skandhabanga, that means the drooping of shoulders, wasting of shoulders, and jadatva, weakness of whole body, and finally the eighth stage, it leads to death. The treatment for Vasanabha poisoning mentioned in our classics is using antidote. The known antidote is Vasanabha. Vasanabha antidote is Tankanabhasmam, is given with Ghritam internally. And as it is known cardiac poison, it can be supported by giving Arjuna Kshirapakam or Arjuna Churnam with Ghritam is given internally. In modern medicine, it is in modern toxicology, Vasanabha poisoning is treated by, the first line of treatment for Vasanabha poisoning is stomach wash with KMNO for potassium permanganate solution or saline water, followed by atropine 1 to 2 mg IM, and then followed by, if needs, the atropine 1 to 2 mg IM is repeated, and usually one anti-arrhythmic drug, Novocaine, 0.1% of Novocaine is given in IV route, and in case if the patient develops dyspnea, fumes, the inhalation also helps for the patient. So remaining others treated symptomatic treatment was mentioned. And the purification of Vasanabha is mentioned in classics. Various methods have been mentioned, where the two different methods have been observed with Vasanabha Shadanam. These two methods, Bhavanam and Svedanam. Bhavanam is in cow's 7 days, where every day cow's urine is used. And during night time, the Vasanabha roots are taken out from cow's urine and it is dried under shade. Every morning, the roots are kept in cow's urine. Poor, very poor signaling. Yes, I have joined again. Am I audible, sir? Yes, yes, sure. Thank you. And the second known procedure is Svedanam, boiling in yantram with cow's milk for 1 muhurta kalam, 48 minutes, is another procedure for Vasanabha purification. So a few folk Vaidyas also do Svedanam with Triphala Kashayam also. So in that way Vasanabha can be purified. The pure form of Vasanabha can be stored. And there are many substitutes and adulterants for Vasanabha. Aconitum species like Aconitum heterophyllum is taken as Ativisha. Sometimes it is adulterated. And Aconitum chasmentum is Aconitum palmentum. And Aconitum nepellus is common substitute for Aconitum ferox. And Colocasia esculenta, which is edible Colocasia root, which looks the same, the shape looks same. So usually adulterated by herb sellers. They wantonly adulterate this. And Gloriosa superba root also a known adulterated in Vasanabha. So with this, with all this, I could give proper drug review about Vasanabha, and at the end, let me conclude about Vasanabha in outright. It is yes, it is poisonous plant, poisonous root, but the properties of aconite, the
aconitin, and the combination of aconitin, aconite chemical compounds like catecholamines, isoquinoline, and ammonium compounds. These all together are found in the tuberous root, and because of all these chemical compounds, it gives a combination of anti-inflammatory action, antimicrobial action, pharmacodynamics. VATSANABH will count the high-grade fevers and control the body temperature, and by which I can substantiate today that aconite is an ideal antipyretic drug. Thank you. Excellent, Dr. Mallikarjuna. Very nice. You have covered almost Thank you, sir. all. Thank you so much. Agnihotri. Namaskar. Thank you, Dr. Pawan Sharma ji. Very good presentation by Dr. Mallikarjuna Rao, sir. Of course, he touched all the related areas to VATSANABH. Actually, in a very deep manner, he talked about the synonyms, the types, and also of the colors of VATSANABH root as well. Of course, its toxicity, along with its pharmacological action, its indications, and preparations available in the market with the names of, say, Mrityunjay Ras, Singleshwar Ras, Anandbhairav Ras, Sanjini Vati, etc. With a proper command of the dose also, that 20 milligram by weight of the tiller. So that's you see, before the CGS and MPS system, how these things were managed. At the same time, thanks to all my great Vaidyas who were so dare-taking and confident for preparing the VATSANABH preparations, using VATSANABH in a very proper manner, though the days was like that there was no proper provision for the toxicity study. Still then, they were so confident, they were making, and the Sanjini Vati was the drug of choice by all means if there is any onset of fever. And he touched all the areas along with the fever to the Sutika Jwara also. So in this way, not only he talked about the complication and poisonous effect of if it is not used purified form or it is taken overdose, along with the fatal dose and fatal time, along with the antidotes also. So very good presentation. The title is said to be the very important antidote of aconite. If the patient who used any preparation of a snub started giving the symptoms like palpitation or arrhythmia, even vomiting, shivering, chill, or even the hypopyrexia like this situation, he should be rushed with a proper treatment so that the life can be saved. Patient can be managed before going to coma or shock like that. So thank you very much, Dr. Mallikarjuna Rao, sir. Great information to the platform. With all due respect, may I add two more points, sir? Yes, sir. Yes. Sure. Was mentioned by Rasa Vagbata, and even the same dosage when we come across Brahma Rasayanam in Charaka Chikitsa first chapter, Brahma Rasayanam. In that recipe also, Charakacharya said the dose of the tila, dose of Visha aconite must be added 1 tila pramana. The same in this recipe, Brahma Rasayanam recipe also, aconite is taken 1 tila pramana for making Brahma Rasayanam. So another thing I can add for my presentation where I missed because there is disturbance in the signal. I had one tuberous root of VATSANABH. When I in Itanagar around in the field visit, I could have one tuberous root. It is fresh tuberous root.
not dried one. Fresh tuberous root I have uprooted and I had the root. When I am having, the local public is telling, don't take. Can you show here itself? If you have got the piece. No, sir, I had that time. I ate. If you got with you, you can show here live presentation. You can show us. No, sir, I don't have now, sir. Okay. The important point is that, please. When I had the tuberous root, which is just like just my thumb size, just our thumb size, Right. the fresh root, just fresh root I had. It is just taste like groundnut when it is fried well in low flame. Similar taste I could feel. It is. I am sure it is Vasanabha, and after having Vasanabha, I didn't feel any poisonous symptoms like whatever explained in the text, but except very few symptoms like numbness and tingling over the oral mucosa, and I could feel palpitations for 2 days, and there is profuse sweating I could feel. Out of these all symptoms, like getting arrhythmias, I didn't feel any such arrhythmias and poisonous symptoms. It is not purified also, just uprooted and I had. So with this, I could conclude. Thank you. You see, the very important point is this that you raised, that since it contains catecholamines and also isoprenoline, naturally these pharmacological and salt has got a wonderful and sharp action. So one should be very careful. If it is not purified properly, it's the life is at risk. So it should be taken care of. Thank you. Thank you so much. I had, because when I am going through the Henry homeopathy pharmacology, he could also have the tuberous root. So I tried. Thank you, sir. Because of its toxicity, I had to rush to the hospital once it had happened with us also. We have to be. It was 96 systolic and diastolic not recordable, vomiting, everything, and after that 1 week of that day, the marriage of my daughter was planned. It was a very tough time. So aconitum's toxicity may lead to any crisis, clinical crisis at any moment. So yes, sir, I do agree, sir. I do agree. Aconite toxicity usually happens because it is very harshly treated when it is bringing to market. It is treated with mustard oil. It is a very wrong way. It is open air. It is dried. So all these matters. But as you told, listen to me. But as you told that it has also got adulterated. So I think the supplements which are added, definitely they will not be giving that clinical effect. So the medicine might be of demerit nature. So otherwise you can say it may be a safe one, that it will not do that action which is supposed to be taken by the Aconitum ferex by its original one. Yes, sir. Yes, sir. Adulteration sometimes it becomes a little bit safer than. Yes, sir. Yes, sir. It is safer. In adulteration also safe. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Over to Pawan Sharma ji. Thank you, sir. Dr. Pawan Sharma ji for next presentation. Yes, I would like to invite Dr. Mohammad Ansari ji from Regional Research Institute of Unani Medicine here in Kolkata. Welcome, Dr. Ansari. Stage is yours. In Unani, it is called Buchnak. I came to know, and doctor will guide us for Unani. Am I audible, sir? Sir, am I audible? Yes. Clear. Respected speakers from different streams, organizers of this conference, and distinguished listeners, a very good evening to all of you. This is Dr. Masihuzzaman, Ansari, Research Officer at SDM KOLKATA. In this online conference, today's topic is dish. In Unani, VATSANABH is called dish, and this Arabic name is
Thanikul Zaid, and in Persian it is called Bishnak, and in Gujarati it is called Vasnak, and in Punjabi it is called Meetha Zahab, Meetha Telia, and so many names are there. Its botanical name is Aconitum napellus, and so many varieties are there. Near about 18 varieties are there. My earlier speaker, Dr. Mallikarjuna, has described in a very well manner, and nearly all the portions have been covered by them, by him. Here, I will present only the Unani portion. In Unani, it is a drug in 4th degree. As we present the, as we treat the medicine according to the temperament. So, Vasanab, the Meetha Zahar, the Vish is in 4th degree. It is hot and dry drug in 4th degree. As the degree increases, the intensity and efficacy of the drug increases. Along with that, the toxicity is also increases. This is the very toxic drug of genus Aconitum, highly toxic from the family Ranunculus. But so we call it in 4th degree. 4th degree. The degree is hot and dry in 4th degree. So before using, we detoxify, that we call in Unani is mudabbar, detoxification. For detoxification of the drug, we do 2 liters of milk is taken in a bowl, and around 2 tola, 24 grams of Vish is taken put in 2 liters of milk, and our light heat, मतलब ये हल्की आंच में उसको पकाया जाता है. फिर जब तक ये खोया की तरह बन जाए, जब वो हो जाता है, जब दूध बिल्कुल पक जाता है, तो उसको फिर हम उसको निकाल के और उसको गर्म पानी से धुल लेते हैं. तो इस तरह से हम उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं. तो अब हम इसका जो यूनानी डिस्क्रिप्शन अगर हम इसको बताएं, तो ये कोनिकल शब्द ये एक जड़ इस्तेमाल करते हैं इसकी, जिसको कोनिकल शब्द रूप होती है, तो छोटी डार्क रंग की होती है, स्टार कलर की होती है. और ये हमारे, और इंडिया की बात करें तो हम हिमालयन रीजन में पाई जाती है. और इसका ये नेटिव प्लेस जो इसका है, ये वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप इसका नेटिव प्लेस है. करीब 1 मीटर लंबा ये प्लांट होता है इसका. और इसके जो फूल होते हैं, वो डार्क पर्पल कलर के होते हैं, डार्क पर्पल कलर के हेलमेट शेप होते हैं, जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर मल्लिकार्जुन ने अभी बताया था कि डार्क पर्पल शेप और हेलमेट शेप होते हैं ये. और इसमें जो केमिकल्स जो एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं, जैसे एकोनिटीन, मिज़ाइकोनिटीन, हाइपाएकोनिटीन एंड जेसाइकोनिटीन, ये हाईली टॉक्सिक होते हैं. तो जब हम इनको डिटॉक्सिफाई करते हैं या मुदब्बर करते हैं, इसके बाद ही हम इनको इस्तेमाल करते हैं. अब अगर हम इनके आफात की बात करें, जैसा या एक्शंस की बात करें, तो ये दाफे बुखार है या एंटीपायरेटिक, जैसा कि आज का टॉपिक है कि ये विष एक बेहतरीन एंटीपायरेटिक है. तो हमारे यहाँ भी यूनानी में भी इसका जिक्र है कि एक दाफे बुखार, ये बेहतरीन दाफे बुखार दवा है, एंटीपायरेटिक दवा है. खास तौर से ऐसे बुखार जो किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हों, जैसे प्लूरेसी में या न्यूमोनिया में, या और भी कोई ऑर्गन हो जिसके इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई बुखार पैदा होता हो, तो इसके लिए ये बहुत इफेक्टिव दवा है. और इसके अलावा इसका दूसरा एक्शन है
ये मुशक्किल वजह है, यानी कि एनाल्जेसिक, बेहतरीन एनाल्जेसिक भी है। और इसके अलावा जो दूसरा एक्शन इसका है कि लोकल एनेस्थेटिक की तरफ पे भी काम करता है, जिसको हम लोग यूनानी में कहते हैं मुकामी मुखद्दिर कहते हैं। इसके अलावा ये डायूरेटिक भी है, इम्यूनोवोग है। और इसके अलावा क्योंकि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट जो होता है वो टेम्परामेंट के हिसाब से होता है। हमारे यहाँ 4 टेम्परामेंट होते हैं यूनानी मेडिसिन जो हम कंसीडर करते हैं, जो इलाज करते हैं। तो हम जिस टेम्परामेंट की बीमारी होती है उसके हम उसके अपोजिट साइड की दवा हम देते हैं। तो क्योंकि ये हार्ड ड्रग है, ये गर्म दवा है, बहुत गर्म दवा है, तो हम जो जितनी ठंडी बीमारियां हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे जितने भी बलगमी और सौदावी जो बीमारियां हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लिपोडर्मा, लेप्रोसी या ब्रोंकियल अस्थमा, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। या जो क्रॉनिक अल्सर्स हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये चूंकि मुकामी मुखद्दिर है, लोकल एनेस्थेटिक है और मुशक्किल वजह है और एनर्जेटिक है, इसलिए इसको लोकली हम इसको शकीका माइग्रेन में भी इस्तेमाल करते हैं, और इल्कुनिसा जिसको हम शियाटिका कहते हैं उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका और इसको मतलब और इसका जो डोज हमारे यहाँ बताया गया है वो 1 चावल से लेकर 2 चावल तक बताया गया है। 1 चावल का मतलब होता है 15 मिलीग्राम, यानी 15 मिलीग्राम से लेकर 30 मिलीग्राम तक इसका डोज जो बताया गया है। जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर मल्लिकार्जुन, कि इसके मतलब ऑन एन एवरेज डोज इसका 20 मिलीग्राम है। और इसका जो बदल जो मतलब सब्स्टिट्यूट की बात करें अगर, तो इसका सब्स्टिट्यूट जदवार हमारे यहाँ डेल्फिनियम डेनुडेटम, इसको हम डेल्फिनियम डेनुडेटम कहते हैं, इसके बदल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसको क्योंकि हम ऑलरेडी डिटॉक्सिफाई करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर थोड़ा सा डोज ज्यादा हो जाता है तो इसमें साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो एंटीडोट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं बर्गे बेदे इंजीर। और इसके अलावा हम वोमिट करा देते हैं पेशेंट को, और वोमिट कराते हैं और उसके स्टमक को प्रॉपर्ली मतलब वॉश करते हैं, तो इसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और उसके सिम्टम्स क्या बताया गया है कि कैसे पता चलेगा कि इसको साइड इफेक्ट हो रहा है, टॉक्सिसिटी हो रही है। स्टार्टिंग में ही हल्के मतलब झंझनाहट शुरू हो जाती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो जाता है, बर्निंग चालू हो जाती है, और माउथ में और फेस में बर्निंग हो जाती है, टिंगलिंग होना चालू हो जाता है। इस बाद में एब्डोमेन में भी बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा बाद में नंबनेस चालू हो जाता है, और डोज और ज्यादा हो गया तो फिर एट लास्ट कोलैप्स हो जाता है और पेशेंट फेंट कर जाता है, और बाद में डेथ भी हो सकती है। क्योंकि हमने अपने इस प्रेजेंटेशन को बहुत शार्प किया है इस वजह से, तो क्या है कि हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत हद तक, डॉक्टर मल्लिकार्जुन साहब ने बहुत हद तक कवर कर लिया है जो मुझे कवर करना था। और बस ये यूनानी पोर्शन हमने इसमें रखा है। इसी के साथ मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Ansari. Excellent. From Unani side, you have explained everything. Now, I would like to request from Dr. Mohsin Delviji. He is also here from World Unani Foundation. After a long time, welcome, Dr. Mohsin. Your opinion about aconite, bushmark. Welcome to all. I'm sorry for not joining you in time, and also after a long time, busy in some conferences and workshops. But now I assure you that I will be there with you regularly. I missed most of the part of Dr. Ansari's presentation. As a manufacturer, हम लोग इसको पहले डिटॉक्सिफाई करते हैं। बिचनाक इट्स शेड्यूल E1 ड्रग, और हमारी कुछ आई थिंक प्रोप्राइटरी मेडिसिन में तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, और क्योंकि ये क्लासिकल मेडिसिन में है काफ़ी, और जैसे डॉक्टर अंसारी ने कहा कि ये काफ़ी
कम मिकदार में, बिकॉज हमने नोटिस किया है कि जितने भी इसमें टेम्परामेंट होते हैं कि कौन से टेम्परामेंट का ये ड्रग है, तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक दिस इज 4th डिग्री ड्रग, और जितना भी डिग्री हाई होती है उतना वो इफेक्टिव होता है, बट इट इज गिवन इन अ वेरी स्मॉल डोज, और डोज देने से पहले हम इसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसको दूध में हम पहले इसको पीसेस में काट के फिर एक पोटली में साफ कपड़े में बांध के और इसको दूध में हम इसको भिगो देते हैं, एंड वी बॉयल द मिल्क टिल सच टाइम कि वो मिल्क जो है पूरा इवेपोरेट हो जाए। उसके बाद उस पोटली को खोल के उसको वाटर हम इसका से बिचनाक मुदब्बर, हमारी यूनानी टर्म होती है मुदब्बर। सो दिस इज हाउ वी यूज। और अब हमारे जो ड्रग एक्ट में है कि अगर कोई हम शेड्यूल E1 ड्रग अपने प्रोप्राइटरी मेडिसिन में हम यूज करें तो उसको हमें पहले एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी उसकी करानी पड़ेगी, और वो 14 डेज की स्टडी होती है जो रैट्स और गिनी पिग्स पे होती है, और उसके बाद ही हमें अप्रूवल्स मिलता है। सो ये थोड़ा बहुत मेरा तजुर्बा है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mohsen Sahib. Thank you very much. Now I would like to request Dr. Pradeep. आप जुड़ते रहिए मोहसिन साहब, इतनी रिक्वेस्ट है, जुड़ते रहिए, आपका है। मैंने इसलिए शुरू में अपॉलॉजी आप लोगों से मांगी कि I was not there for quite a long time. Sorry for that. Thank you जी, thank you. Now I would like to request Dr. Pradeep. He is the expert of Dravyaguna from SDM HASSAN. Welcome, Dr. Pradeep. Yes, sir. So, good evening, respected dignitaries and who are present here. So today we are going to discuss about the VATSANABH, the best antipyretic effect. But when you read that Charaka Samhita, he has not mentioned in any of the Jwaragna Dravyas, even Jwara Chikitsa also not mentioned the VATSANABH, and even Jwarahara Mahakashayas also, they are not mentioned the VATSANABH. So only he mentioned the drug in the Sthavara Vishas. So in the 25th chapter, Sthavara Visha, he mentioned VATSANABH. Why? Because it is Mahavisha, one of the most poisonous drugs. So that's why I think he avoided in the Chikitsa. So when you come to the introduction regarding Jwara, so Jwara according to the Ayurveda, that how it happens. So there is so many causes for the Jwara. It may be Baya or many Nidhanakara factors. So due to the Nidhanakara factors, what happens? So the Pitta dosha, especially it is Pitta Pradhana Tridoshaja Vyadhi. So especially Pachaka Pitta, which spreads the Ushmata or Ushma Guna from Kosta to Shaka. So that it causes Jwara. So Jwara, all the Tridosha plus Manasika dosha, Rajas and Tamas, that all the doshas are involved in it. Isn't it? So Pratyatmika Lakshanas or Pradhana Lakshana of Jwara is Jwaram Pratyatmakam Lingam Santapo Dehamanasaha. So Manas Santapa as well as Sharira Santapa or body temperature, increasing of body temperature, the Sharira. So even according to the modern, so more than 98.6 degree Fahrenheit is considered as Jwara. Or some people they consider more than 99 degree Fahrenheit. So fever is rise in the body temperature above the normal temperature is usually caused by the infections. So any other kind of infections. So come to the Chikitsa Sutra of that Jwara, Langanam Svedanam Kalo Yavagu Stiktako Rasaha Pachanan Avipakwanam Doshanam Tarune Jware. So Dharana Jwara or Amaja Jwara, isn't it? So that Langana Chikitsa is very much important role. So next we will discuss about the Rastapan Chakras, that what is Langana. Langana is, it may be a fasting to correct the Agni. So correction of Jatragni as well as Dhatvagni is very important role in the treatment of any kind of diseases. And Svedana.
Actually, here that Jara Sweda Avarodha is there. So the drug which stimulates the Sweda, so can bring it to the normal temperature or normal body temperature. And during the Jara, we need to advise a light diet or Lagu Ahara Viharas, which are easily digestible and which correct the Agni and functions of Pachaka Pitta. So that both is very important to treat Jara. So Madrana, so the thermoregulation system includes the hypothalamus, that which regulates the body temperature, as well as sweat glands, that Swedavarodha, one which stimulate the Svedavasrotas, and skin, circulatory system, and the human body which maintains the temperature about 98.6 degree Fahrenheit. So this is that Charaka Gana that I am stressing. So Charaka mentioned Sariva, Sharkara, Pata, Manjista, Draksha, Pilu, Parushaka, Amalaki, Vibitaki, Haritaki. So these are Jarahara Mahakashas. Mainly it is Pitta Samshamana Dravas or Pittahara Dravas. Correct the functions of Pitta. So here that any kind of disease occurs due to the either Ruddhi of the dosha or Kshaya of the dosha. So Shamana means the drugs which bring it to the normalcy or Prakruta Avastha of the dosha dhatu malas. So then which helps to maintain the swastha. Swastha means samadosha samagnischa samadhatu malakriyaha prasannatmendriya manaha swastha ityabhidiyate. So that is important. So bringing to the normal functioning of the dosha dhatu malas. So come to the drug. So discussion of drug Aconitum ferox or Vatsanabha. Vatsanabha, the botanically which is identified as Aconitum ferox, belongs to the family Ranunculaceae. So this already completed. So the main chemical composition present in the drug is alkaloid, diterpene alkaloids like aconitin, pseudoaconitin, hypoaconitin, neophyllin, and nephillin. So these are the very important alkaloids. So regarding alkaloid, we will discuss later after a few minutes. So come to the Rastapan Chakra, the mode of action of Jaragna property based on Rastapan Chakra. Even our research, that Ayurveda research is the Karyat Karananumana, even modern research also. So first observation of the action of drug or drug action, then find out the Karanas. Karanas means the chemical composition may be responsible for decreasing the disease or curing the diseases. So like we are predicting the Karyat Karananumana, isn't it? Even Acharya, that Sushruta also says, Karma Bistva Anumiyante Nana Dravyashrita Gunaha. So first observation of the karma, so Jaragna property of Vatsanabha, then we can conclude that Vatsanabha is having Jaragna property or antipyretic property. So only after administration only we came to know the Jaragna action of Vatsanabha, isn't it? So Charaka said that Kochit Dharma, Kochin Maitri, Kochit Dharta, Kochit Desha, Karma Abhyasaha, Kochit Cheti, Chikitsa Nasti Nishpalaha. That means when practically applicable, any drug practically applicable, then we came to know the real functions or actions of the drugs and even side effect or other functions also, advantages and disadvantages of the drugs. Here when come to the Rasa Panchakas, Rasa is Madhura Rasa, mainly. Pradhana Rasa is Madhura Rasa. So other rasas are Tikta, Shaya, Rasa. Guna is Lagu, Ruksha, Tikshna, Vyavahi, Vikasi Guna, Ushna Virya, Madhura Vipaka. So Doshagnata is Tridosha Shamaka. So mainly Tridosha Shamaka, it is a Pitta Samshodaka, Kapavata Shamaka. So Samshodana of Pitta. So Pitta Ashraya is Rakta and Sweda. So one which stimulate the functions of Rakta and Sweda. So then bring the temperature into the normal. Here the Madhura Rasa, what happens? It is Pitta Shamaka, isn't it? And Tikta Kashaya also. So Charaka, while explaining the karma of the rasas, or Madhura Rasa karma, Amla Rasa karma, Lavana Rasa karma, Tikta Rasa karma. So he mentioned Jaragna property is due to the Tikta, Kashaya and Madhura Rasa, because these are the Pitta Shamaka rasas. Then come to the Lagu Guna. So definitely that Jara is due to the Ama only, that Agnimandya. It may be Jatragnimandya Janita, and it is a Rasavaha Sroto Vikaras, considered as Rasavaha Sroto Vikaras. So actually there is
Sroto Dushti Vikara is Sroto Sanga and Vimarga Gamana. So the Ushmatva transfer from Kosta to Shaka or spreads from Kosta to Shaka, then it produces Jara. So in Lagu Guna, so what happens from the Lagu Guna of the Dravya? So Lagu Guna is Langane Laguhu, or which correct the functions of Agni, Lagu Guna. Listen, or Lagupatyam Paramproktam Kafagnam Shigra Pakicha. So it is Kafahara Dravya. Lagu Guna definitely it acts as Patya, Lagupatyam. Patya means Patyam Pano Pato Anapitam Yeddecha Uktam Manasaha Priyam. Pata means Srotas. So that which clears the Srotas are the drugs which avoid the obstruction of Srotas. So those are the functions of Lagu Guna. So this Vatsanabha also having Lagu Guna. So Lagu Patyam Param Proktam Kafagnam Shigrapaki. So it is Kafahara and Shigrapaki. So easily digestible. That Amajjara is converted into Jirnajjara or Pakwa. Same way that Ruksha Guna. So Ruksha Guna also, yes, Shoshane Shaktihi Rukshaha or Kafa Shoshana, or it may be Ama Shoshana of the Dravya. Then Tikshna Guna. So Tikshna Guna Karma also mine is Yesse Shodhane Shaktihi Satishna, act as Sroto Shodhana. So that which removes the Sroto Sanga, Sroto Shodhana property, or even Tikshna Guna which causes the Pakvata, that Ama is Pachana and Pakvata. Next, Vyavayi Guna. So Vyavayi Guna, Vyavayam cha Akilam Dehe Vyapya Pakaya Kalpate. So which stimulate the fast functioning or fast action of the drugs. When Vikasi also, Vikasi Vikasanneva Sandibandhan Vimokshayit. So which the drug which is able to enter into the Sukshmaha Srotas, and there it shows its action or the drug action. Isn't it? So these are based on the guna that Jaragna action can be predicted. So mainly Jara, there will be Ama is there, that Amapachana, Deepana, and bring the vitiated Pitta from Shaka to Kosta. Isn't it? Ushnaviryas, yes, Svedane Shaktihi Sa Ushnaha. So one which stimulates the functions of Sveda. Actually in Jara that Sveda Avarodha is there. I think one he might have experienced after taking the paracetamol. So he might have sweating. So after sweating only the temperature will be reduced. So the same thing happened in the Vatsanabha also. Vatsanabha, due to its potent Ushnavirya, it increases or it stimulates the functions of Svedavaha Srotas. So due to the functions of Svedavaha Srotas, that Srotas or channel which is Sanga or obstructed will be cleared. So then the temperature is automatically reduced. Right? So it is Madhura Vipaka, definitely it is Pitta Shamaka or Srushta Vinmutra Karaka. Srushta means that proper functioning of Mala, Mutra and Sveda. So that is Srushta Vinmutra Karaka. So that's why the Doshagnata is, it is Tridosha Shamaka or Kapavatagna. Tridosha Shamaka is mainly Pitta Samshodaka and Kapavata Shamana. So bring it to the normal functioning of three doshas. The other functions is mainly, it is Sveda Janana. The Jaragna property of Vatsanabha is due to the Sveda Janana only. So which stimulate the functions of Sveda or sweat gland. Jaragna, Madakari. So Madakari, when improperly used, it acts as Mada. Buddhilumpati yadravyam Madakari taduchyate. So any drug, the poisonous drug that Acharyas explained, isn't it? Poisonous drugs, if properly used, act as Aushadha. Isn't it? Yogadapi Visham Tikshnam Uttamam Beshajam Bhavet Beshajam Cha Api Duryuktam Yata Sampadyate Visham. So the same thing explanation is given in the medical jurisprudence also. So any drug or any poisonous drug, if properly used, act as best medicine, Amrita. Otherwise, that even best medicine also act as Visha. And Balya. So Balya, mainly if properly used after Shodhana or Shodhita Vatsanabha, if we used, so it acts as Balya or strengthening the this one, Dhatus, Rasadi Dhatus. So Rasayana Karma, Rasadinam, Dhatunam, Ayanam.
one which nourishes the rasadi saptadhatus. So that's why that Vatsanabha is best indicated even in case that acute fever condition also best indication. Jara, it may be used in Sannipataja Jara or Vishama Jara, when Jangama Visha. So it is Vishagna. Even though it is Vishadravya, it is Vishagna. I think I might have observed that. What is antidote? So antidote means one which neutralizes the poisonous effect. So it may be a physical antidote or chemical antidote or physiological antidote. Here the Vatsanabha drug may act as chemical or physiological antidote. Chemical antidote means that which decreases chemically. So the drug which decreases chemically or neutralized chemically. For example, that alkalides are neutralized by the acids or acids are neutralized by the alkalides. The same action. So when you treat it with the Gomutra, the alkaloidal effect will be reduced. Or otherwise that physiological actions. So physiological actions or pharmacological action means usually that which stimulate initially a small dose of Vatsanabha which stimulate the functions of cardiovascular system. Then if large doses, then depression action. So what we are studying in pharmacodynamics. So the dynamics or probable mode of action is either the stimulation of the drug or depression of any system. It may be GIT depression or cardiovascular depression or CNS depression. Stimulation also that cardiovascular, CNS, that is. So according to Ayurveda, you consider as Samanya Vishesha Siddhanta, isn't it? And that replacement also there, that no need here, I think. So when you come to the modern pharmacology, so it has a hypotensive and bradycardiac action or impairment of bradycardia. Or corrections are if small dose or Aushadha Dravya act as corrections of bradycardia. So here the picture is there that how the temperature is reduced. Vatsanabha, isn't it? So temperature generally which is regulated by the one is hypothalamus and another one is blood, sweat gland and skin. So these are mainly responsible for regulation of body temperature. Here due to their Ushna Guna, so which act as vasodilatations or peripheral dilatations. So when peripheral dilatations, so it increases the blood circulations, and due to the increase of blood circulations, Rakta and Pitta is Ashraya Bhavas, so which increases the Sweda also. So due to the Sweda or once sweat comes, the temperature automatically reduced. The temperature which is present in the skin is automatically reduced. Here, the capillaries dilate near the skin surface to lose the heat to the environment or loss of heat in the body. Sweat gland begins to secrete, causing the heat loss by evaporation. Then according to the modern also, the mechanism of action is one is through conduction, through convection, radiation and evaporation. So the Vatsanabha also doing the same. Then conduction of heat or heat transmission from one place to the another place or convection. Convection through the fluid, heat movement through the fluid, or it may be through Rakta or through Sweda, movement of heat. Then radiation, one place to another place through the electromagnetic radiations. And evaporations, evaporation through the sweat, the evaporation of heat. So this is the probable mode of action, even according to the modern. The same action can be expected through Vatsanabha, the body temperature regulation. Another one is the nervous system signals dermal blood vessels to dilate the sweat glands to secrete. So definitely, which stimulate the functions of Swedava Srotas. So after Sweda, once sweat comes, automatically the temperature is reduced. I think you might have experienced after taking the tablet paracetamol. So this is the probable mode of action of Vatsanabha. So come to the
matra. So dosage, Acharyas explained. So 1/8 rati, that means 125 divided by 8, almost 15 to 20 mg is best for therapeutic result or therapeutic use. So it can be given along with the many other drugs also with the combinations. So Charaka said, Anena upadeshena nanoshadi bhutam jagati kinchit dravyam upalabhyate tam yuktimardam cha tam tamabhipretya. So if you have a good knowledge regarding the drug, so you can use as you wish, isn't it? In different formulations, or in the form of sarasa, or kashaya, or churna, or vati, asavarista. So, but you have a good knowledge regarding the drug and useful part of the drug and how to use and when to collect. So that also important. Sangraha Samrakshana Vidya also important. So Rasaratna Samuchaya explained in the Sarshapa Pramana. So first day, one Sarshapa Pramana. So because the bodies need to adjust for the drug. Then next day onwards, daily one Sarshapa Pramana can be increased up to the 4 days. 2 Sarshapa Pramana, 3 Sarshapa Pramana, and 1 Sarshapa Pramana increased every 4 days. So like that up to 1 rati or maximum up to 125 rati. So only Shodhita Vatsanabha must be used. So then this already discussed. So that fatal dose is 1 gram of root or even more than 125 mg. So only aconitin is 2 to 4 mg. Aconitin is a single active principle or single diterpene alkaloid. Here in the modern, what happens always, so there is a single alkaloids or single glycosides. So the action is one-way action, either one which stimulates the functions of system. It may be cardiovascular system or CNS system or GIT, whatever it may be, or depression action, one-way action. But Ayurveda formulations which contains many active principles. So that's why they are balancing the action. Suppose the one drug which stimulates the functions of central nervous system, so another active ingredients suppress or depression the CNS and which balance the functions or prakruta avastha of the dosha dhatu malas according to the Ayurveda. So this already discussed the toxic symptoms. So toxic symptoms after injection, usually it can be advised either suicidal or homicidal purpose. They are commonly used because it is Madhura Rasa, that administration is easy and dosage also very small. So that's why that illegally they are used. So it causes mainly tingling sensation, numbness, salivation, nausea, vomiting, diarrhea, and giddiness. And ultimately it causes impairment of vision and speech. So because here what happens, the peripheral circulations are increases and the circulation to the vital organs like heart or brain will be decreased. So that circulation decreases to the vital organs, the vital organ function will be impaired. So that's why the death may be due to the cardiac arrhythmia. So that's why it should be used properly and very carefully after Shodhana only. So antidote is Tankana. So antidote, I told you, the drug which neutralizes the action of others. It may be neutralized either physically or neutralized chemically or neutralized physiologically. So this treatment is gastric lavage or stomach wash or immediately induce the vomit by giving any of the either water or anything or strong tea. So strong tea is contains tannin that acts as a physical antidote which prevents the absorption. And go for symptomatic treatment. Symptomatic treatment usually that cardiac arrhythmia is there. So treating of arrhythmia or which stimulate the cardiac functions. So Sevana Kala, when to consume Vatsanabha. So Vatsanabha, it should be given in Shita Rutu and Vasanta Rutu. Vasanta Rutu and Shita Rutu. So contraindication, heavy rainy season should not be given and due to Krodha, Bhaya and Pitta Prakopaka factors. The person who consumes Pitta Prakopaka factors,
So there it should be avoided. And Pitta Prakopaka Rutu also should be avoided, or avoiding the giving of Vatsanabha preparations. During Vatsanabha Sevana, one should avoid Amla, Lavana, Taila, Diva Sopna, and Duma Sevana. So it can be given with either Gokshura or Gokshira or Gruta and Madhuradi Padarthas. So this is the Shloka Bhava Prakasha Nigantu. So with this I conclude this our topic, Vatsanabha, that antipyretic effect. So based on the Rastapan Chakras, Dravyaguna perspective. So that's why understanding of Rastapan Chakra is very important role to treat any of the diseases. Thank you, and thank you for all organizers and all the team and all the members who are attended this program. Thank you, Ananda. Thank you very much, Dr. Pradeep. Thank you very much. Excellent presentation. You have covered right from the fever to aconite. Excellent. Agnihotri sir. Yes, sir. Thank you. Namaskar. Dr. Pradeep Kumarji from HASSAN. Since you are belonging to Dept department, very naturally you justified all information from the department itself and from the herbology or Dept. Your address made one point in my mind, that you told that Charikacharya never and nowhere mentioned aconitum preparation as a Jaragna. He narrated it in a Mahavish or under the category of Vish. So would you like to tell me, though it may be a chapter of or question of therapeutic department subject, means Kai Chikitsa, etc., that though it is a herbal preparation, so who Acharya started? I think Bhava Prakash ji or who Acharya started taking its therapeutical use as a Jaragna? This is one question in my mind. Yeah. Hello. Your voice is not coming. Hello. आपकी आवाज? Hello. जी. आपकी आवाज नहीं आ रही है. Hello. Dr. Pradeep ji, हाँ, yes, please continue. In the Samhita, especially that Charakacharya, that principle, it can be considered as a principle of medicine. Actually, he advised more that plant origin drugs or Dravyaguna to only plant origin drugs. He avoided the more poisonous drugs or toxic drugs, many of the formulations. Right? Even Sushruta also that follow the same. So during Nigantu period and during that Rasa Shastra period when starts. Hello. Yes, they are mentioned only that Stavara and Jangama Dravyas and Jangama Yonis for the medicinal purpose. So the prime importance of Charaka is Swastasya Swasthya Rakshana. Right. Prevention. Second importance is Aturasya Vikarma. Second importance is that Aturasya Prashama are curing. आवाज आपकी आवाज नहीं आ पा रही है. Apatya. So it always in relation to the Dinacharya. If you follow proper Dinacharya, even by that only we can maintain and prevent many of the diseases. You made the point clear, but what I wanted to know, that if Charkacharya talks about the Swastasya Swasthya Rakshanam, and that too in a Sutrasthan or Pratham part, then again he has also made that Chikitsa Sthan. He also informed all the good preparations as far as the treatment is concerned. But as you told that Nagarjun Kal or persons coming, those who are talking about the Visha Upavish Mahavish in Agadatantra or in Rashastra, they were using somehow or other
in a bhavana dravya or in other purified form. So I think, as per your information, that therapeutic use of Vatsanav is started after the Nighantu period, along with the Nagarjuna's intervention, with the preparation like herbal mineral preparations. Rashastra, Dr. Pawan Sharma ji will also. Nagarjuna period only they started. Yeah, and our Rashtra Shastri, Dr. Pawan Sharma ji will also help you to make my questions answer. So thank you so much for your information. You also talked about so many antidote also. That is very important. That since it has got a drastic action as far as the poisonous consent is concerned, and is taken by mistake in overdose, either in a preparation form or by mistake, so it may lead to suicidal tendency or homicidal tendency because of its sweet taste in beginning. This is something one should care for, because the cow and cattle charwa, they used to go to field side, of course at heights also. If by mistake or by nature, by habit, they used to pick up some cucumber, something just to put inside. They used to use this walnut tree branch as a daton. So they may take such type of things in a kautuhal, in a curiosity manner, and this may happen in a form of some poisonous situation. This is what you highlighted. So it should also be taken care of for the countryside person. So thank you very much. Thank you, Dr. Pradeep Kumar. You just informed all the very good related information coming from the Nighantu and coming from the Charka. So kind of you. Thank you. Yes. Over to Dr. Pawan Sharma. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Pradeep. Thank you very much. My question is one, sir. What I am asking questions for all poisons, like I asked about Ifen, Vijaya. Have we ever seen any side effect of Tribhuvan Kirti or any medicine we are giving that we can claim or we can observe that this contraindication or this side effect is due to aconitum available in the product? If not, suppose if not, then why we are fearing when our Unani and Ayurveda system of purification reduces the toxic elements in the root or tuber, whatever it may be. So please guide me in our practice of Unani or Ayurveda, whether we have observed any serious toxic effects of aconite through any product. Session is open for all. Kamini ji, namaskar. Dr. C.P. Sharma ji, namaskar. Ji, please. Namaskar. Yes, please. Namaskar. We are using Tribhuvan Kirti a lot. We are using aconite products in regular our daily practice. What we are not fearing. But we are hearing from Upavish, Ifen, Upavish, Bhanga, and Mahavish we are using. This is my question. So actually that Vishadravas, even especially plant origin Vishadravas, we can use for medicinal purpose. So that our formulations is made, I told you, no, sir. So that one drug, if it is, the probable mode of action is either the functions, stimulations of the system. It may be CNS system or cardiovascular system or GIT system or depression. So that Samanya Vishesha Siddhanta or Chikitsa Sutra is, so the drug which bring back to the normal functioning of the dosha dhatu malas or prakruta avastha of the dosha dhatu malas. So Acharyas explain the formulations that based on that only. Even combination of the drugs. Example that Tribhuvan Kirti Rasa, Ingulam cha Vishamyosham, Kankanam Magadishapam. Suppose one drug which stimulates the functions of heart or cardiac functions. So another drugs which balancing the functions of cardiac system or cardiovascular system. That's why the balancing action. In the modern system, what happens? Only a single chemical component will be there. Single chemical ingredient. So that is one-way action, one-way directions. Either a stimulating effect or depression effect. So that kind of effect in the modern pharmacology. But Ayurveda pharmacology is different.
Very nice. Nicely explained. Thank you, doctor. I would like to request Dr. Rampal Somani ji, if I am audible to him. Any expert who has observed any good effect or bad effect of Aconitum product. Good effect will be supportive to inspire next gen, and if it has any bad effect of side effect, we will be definitely cautious about that, and next gen will use that very cautiously. Please, guys. सर थैंक यू, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और डॉक्टर प्रदीप जी ने कुछ आंसर दिया। एटलीस्ट मेरे पास 2 से 3 बल्कि 4 उदाहरण है, बिल्कुल ये प्रत्यक्ष उदाहरण है ऋषिकुल और गुरुकुल के, जिनमें कि ऑलमोस्ट चारों डॉक्टर ही सफर किए हैं। हमारे पास हमारी ऋषिकुल फार्मेसी का बना हुआ ही हिंगलेश्वर रस था और वो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे कॉलेज की हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी में ही था। और सबसे पहले हमारे एसएन श्रीवास्तव जी जो गुरुकुल में रोग निदान में थे, उन्होंने अपने किसी एलिमेंट की वजह से लिया था और उनको उस पर रिएक्शन हुआ। और डॉक्टर प्रोफेसर आरपी गुप्ता जी का जमाना था फार्मेसी, ये बात 75 और 80 के 78 के बीच की है। और ऐसे ही उसी लॉट के उसी इंग्लिश रस से हमारे अपने कॉलेज के ऋषिकुल कॉलेज के निदानाचार्य जी थे देवेंद्रनाथ शास्त्री जी, उन्होंने भी जोड़ के उसमें इसको लिया था और उनको भी स्थिति डामाडोल हो गई। आपने कहा कि वसनाव की उपस्थिति के कारण उसमें कोई उपद्रव हुआ है, तो ये तो तभी संभव हो पाता यदि उस समय उनका वोमिटस या गैस्ट्रिक लेवास करके उसका एनालिसिस किया जाता और पता लगता है कि क्या वसनाव टॉक्सिसिटी के कारण ही इनको तकलीफ हुई, तो उसमें तो प्राण बचाने की स्थिति होती है। और उसके बाद हम दोनों लोग इंग्लिशरस तो बाद में ये तय हुआ कि वो पूरा लॉट विड्रॉ कर लिया गया था ऋषिकुल फार्मेसी से, गुरुकुल से भी मंगा लिया गया था और उसको बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन से बैन कर दिया गया था। इसके बाद आई संजीवनी बट्टी की बात, तो इंग्लिश में तो डॉक्टर सुनील जोशी तुरंत भागे आए, उन्होंने पूरा उंडेल दिया, मतलब उन्होंने 20 ग्राम टंकण मंगाया प्रेमनगर फार्मेसी से और एकदम से जैसे पिलाया खिलाया कैसे किया, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉट रिकॉर्डेबल। ये घर में हुआ और उसका मेरे संग में बिटिया की शादी से 1 हफ्ते पहले खा लिया, तो उन्होंने वासोवॉगल सिनकॉप करके डायग्नोस किया था जॉलीग्रांट में। हमको यहाँ डॉक्टर प्रकाश जी नहीं ठीक कर पाए, बंगाली हॉस्पिटल नहीं कर पाए, ऊपर से ड्रिप और चला दी तो शुगर की नौबत आ गई। खैर जैसे जैसे 96 बाई नॉट रिकॉर्डेबल डायस्टोलिक, और उसी में वहां पे मुझको ले गए और उसके बाद सब वेन पेटेंट कर दी, फोलिस लगा दिया, सब करके दिया। जैसे जैसे ज्यादातर उन्होंने उस पर रखा था, डोपामीन वगैरह पर रखा था, हल्का से याद आ रहा है। और कुल मिला के सुबह 6 बजे मैं ठीक हुआ, अगले दिन उन्होंने छुट्टी कर दी, बेटा मुंबई से आया, सब कुछ हुआ। तो मैंने भी संजीवनी इसलिए ले ली थी कि 19 दिसंबर 2012 की बात थी, ग्रीटिंग वो इनविटेशन कार्ड छपे हुए थे और हम डबल स्वेटर पहन के सब कुछ करके बांटने के लिए निकलना था। तो घर से कुछ फीवरिश हो ही रहते, वास्ट फ्लैशमिंग स्थिति थी सीजन के अनुसार, हमने संजीवनी बट्टी ले ली थी और एक समोसा वाला नाश्ते में कुछ खा लिया। तो 31 दिसंबर था, किसी की रिटायरमेंट भी था कॉलेज से, और वो जब हम पहुंचे तो मेरे को, खुद मैं ड्राइव कर रहा था गाड़ी, मेरे ही इनविटेशन कार्ड गाड़ी में पड़े रहे। बिटिया को हमने शताब्दी से रिसीव किया था दिन में 12 बजे और हम लोग शाम को कार्ड बांटने गए हैं। एक सज्जन क्या जा रहे थे, उनके यहाँ पहुंचना मुश्किल हो गया, मैंने गाड़ी छोड़ दी। तो डॉक्टर मीना आहूजा आ चुकी थी, वो तुरंत बीपी इंस्ट्रूमेंट लेके आई, किसी ने मुझे मीठा पान खिलाया कि इससे कुछ स्टिमुलेट हो जाएगा ब्लड प्रेशर। अल्टीमेटली मैं जिंदगी में 25 साल के बाद ये कहा मुझे अस्पताल ले चलो, अस्पताल दाखिल हुआ हूँ, दूसरे अस्पताल गया हूँ और वहां पे जाके जब जॉलीग्रांट पहुंचा हूँ तो जाके सुबह तक मेरे को ठीक हुआ है। तो उन्होंने वासोवॉगल सिनकोप लिखा था, और जो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में होता है, अगर क्लिक कर गया तो ठीक है और नहीं तो खत्म बात। तो ये वसनाभ के, और ये बात मैंने फिर जब मयंक भटकोटी को पता लगा, मेरे सारा स्टाफ पहुंच गया ऋषिकुल गुरुकुल से, उन्होंने कहा मैं जामनगर में पढ़ता था, वहां भी ये केस हुआ। डॉक्टर पवन जी शायद आपके कार्यकाल में रहा हो तो आप याद कर पाएंगे। मयंक भटकोटी जी कहते मेरे तो जामनगर के कॉलेज इंस्टीट्यूट के ठीक सामने मॉडर्न मेडिसिन हॉस्पिटल है, शायद जैसा बता रहे थे, और तुरंत लेके वहां भागना पड़ा था। तो उन्होंने उसको मैनेज किया था विद द हेल्प ऑफ द एंटीडोट्स। तो ऐसा है, तो प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग के डिफेक्ट में, और अगर टॉक्सिसिटी स्टडी नहीं की गई है उसमें है, तो ह्यूमन बॉडी है वो तो सिस्टम्स पर काम करेगी, सीएनएस पर भी करेगी, पाल्पिटेशन देगी, एरिथमिया देगी, हार्ट पर करेगी, सारा करेगी। तो ये मेरे 4 अनुभव तो बाय नेम में कोट कर रहा हूँ जो हमने किए हैं। थैंक्स गॉड कि हम सर्वाइव किए, सभी के सभी सर्वाइव किए, लेकिन थी मतलब उसको कह सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। इसमें एक रिक्वेस्ट मेरी है सर,
जी सर। 15 साल हुए झंडू को खरीदे हुए, झंडू को टेक ओवर किए हुए। जी तब से सब कस्टमर ग्रेवांस और कंप्लेंट्स में देख रहा था। मुझे 14-15 साल में कम से कम 100 से 150 कंप्लेंट्स आई होंगी पारद टिकड़ी की। ओह, व्हाट इज पारद टिकड़ी? पारद टिकड़ी इज मुग्ध रस। मुग्ध रस सर, वो, लेकिन मुग्ध रस आजकल डायरिया में या बच्चों में यूज नहीं होता। वो मुग्ध रस आजकल कीड़े मारने के लिए, अनाज में रखने के लिए यूज होता है। जी वो भी है। वो बच्चे धोखे में खा लेते हैं, कई बार अनाज के साथ पिस जाती है। वो उसमें इतनी मरकरी की क्वांटिटी कम है, लेकिन मदर फादर घबरा के कंपनी को फोन करते हैं कि भाई व्हाट इज एंटीडोट, और उसका सिंपल एंटीडोट है केला और दूध। जो सजेस्ट किया जाता है हम लोगों की तरफ से, वो हम लोग वर्कर्स को भी देते हैं। जो मरकरी में काम करते हैं उनके वर्कर्स को भी हम केला और दूध एडिशनली सुबह शाम देते हैं, जिससे इम्यूनिटी बनी रहे। रूटीन पॉइजनिंग हो जाएगी। लेकिन मैं वही लेकिन लगा रहा हूं सर, लेकिन आज तक कोई भी वत्सनाभ के किसी भी प्रोडक्ट की टॉक्सिसिटी रिपोर्ट नहीं हुई, न डॉक्टर के थ्रू न पेशेंट के थ्रू। मैं यही आश्चर्य कर रहा हूँ कि देखिए सभी कंपनियां अच्छा शोधन करें, ये तो जरूरी नहीं है। राजकीय औषध निर्माणशाला स्कूल की बताया मैंने, तो कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर की बात थी। और मैंने ऑनेस्टी से बताया कि हम चारों लोग बुद्धिजीवी थे, समझदार थे, और हमने महसूस किया। बोलना चाहते हैं अपने अलावा भी? जी सर, यस प्लीज, थैंक यू। पवन सर, 1-2 मिनट देंगे आप प्लीज? अच्छा मैडम पारुल, यस प्लीज। देने वाला मैडम। नमस्कार सर जी, मेरा फेवरेट टॉपिक है सर। अग्नितुंडी और संजीवनी वटी में दोनों ड्रग्स जो है वो मेरी फेवरेट ड्रग्स है। और अग्नितुंडी जो है वो जितने भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, ओलिगोमेनोरिया है, एमेनोरिया है, डिस्मेनोरिया है, उसमें मैं देती हूँ 2-2 गोली सुबह शाम 2 बार देती हूँ। और मेरे गुरुजी जो थे बीडी नंदुरबारकर साहब, वे तो 4-4 गोली देते थे। न मुझे कभी कोई एडवर्स रिएक्शन मिला, न साहब को मिला। और इतने सालों में मैं तो पढ़ती थी तब से अग्नितुंडी दे रही हूँ। संजीवनी वटी जो है, जहाँ पे भी मुझे इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस मिलते थे, उसमें कृमि भी हो सकते हैं, पोस्ट ऑपरेशन भी हो सकते हैं, नॉनवेज खाने से भी हो सकते हैं, उन सभी के अंदर मैंने दिए हैं संजीवनी वटी। और फाइब्रिनोलाइसिस मुझे कर देती है। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में संजीवनी से फाइब्रिनोलाइसिस तक का काम हुआ है साहब। और इसके गवाह जो है सिविल हॉस्पिटल के उस वक्त के जो डॉक्टर्स थे, वे इतने अमेज थे कि पेशेंट के अंदर हम ऑपरेट भी ना कर सके, उतना फाइब्रोसिस हो जाता था। उसमें ये आयुर्वेद की दवाई ने इतना बढ़िया हमें रिस्पांस दिया। वंडरफुल, इट्स ए वंडरफुल ड्रग। मैडम आप क्या यूज कर रही? तो मैं बोलती थी संजीवनी वटी, सिर्फ संजीवनी वटी 2-2 गोली 2 बार देती थी। उसके साथ में और कोई एंटीबायोटिक भी नहीं देती थी साहब, न त्रिफला गूगल, कुछ नहीं। अकेले संजीवनी से इतना रिजल्ट मिलता था। हाँ, हर हफ्ते उनको बोलती थी एरंडपृष्ठ 2 गोली सुबह में हर सैटरडे को आपको लेनी है, बस इतना ही देती थी, क्योंकि शोधन भी साथ में होना चाहिए। वो जितना भी फाइब्रिनोलाइसिस करेगी संजीवनी, उसको निकालने के लिए भी रास्ता चाहिए। तो मैं जो है उसको एरंडपृष्ठ हर सैटरडे सुबह देती थी, और इतना बढ़िया रिजल्ट मिला साहब कि आप जब बोल रहे हैं, ऐसा ही हमारे कॉलेज में भी हुआ था। जूनागढ़ कॉलेज में हुआ, भावनगर कॉलेज में हुआ, अखंडानंद में हुआ, वडोदरा में भी हुआ। सब लोग बोल रहे थे ड्रग वापस खींचो, लेकिन नंदुरबारकर साहब बोल रहे थे अगर ड्रग एडवर्स इफेक्ट दे रही है तो मुझे देनी चाहिए। 4-4 गोली देता हूँ पेशेंट को, कोई पेशेंट आया नहीं कंप्लेन लेके, क्योंकि निराम अवस्था में दिया था विष, साम अवस्था में नहीं दिया था। ज्वर में भी आप जब यूज करते हैं तो ज्वराद उल्लंघनम प्रोक्तम ज्वर मध्य तु पाचनम ज्वरंदे भेषजम दद्यात्, ये सिद्धांत किसी के ध्यान में नहीं आया। ये अगर ध्यान में रखते, निराम अवस्था में अगर विष का प्रयोग करते हैं तो इतना बढ़िया रिजल्ट देता है कि आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मैं पीसीओएस के अंदर जब पेशेंट में सिस्ट बहुत बढ़ जाती है तो इतना पेन होता है साहब, वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती। शी आस्क्ड टू गो फॉर सिस्टेक्टोमी,
कई पेशेंट्स ऐसे भी थे कि जिनको बार बार यानी 4-4, 5-5 बार कंवारी छोकरी है उसको सिस्टेक्टोमी की है, उसमें अग्नितुंडी, आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभा सिर्फ इसी का कॉम्बिनेशन देती थी। मैं उसको कोई शोधन चिकित्सा भी नहीं देती थी। पेशेंट आराम से मेंस्ट्रुएट होती थी, उसको पेन नहीं होता था। और आप देखिए हफ्ते भर में तो बच्ची इतनी बढ़िया दिखती है, इतना निखार आता है उसमें, क्योंकि इसमें आपने पूरा हार्मोन्स को कंट्रोल किया, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल किया। अब जब भी हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो लीवर को ध्यान में रखना है। टॉक्सिसिटी की जब बात करते हैं तब भी लीवर आता है। द बेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी इज लीवर। अभी जिसके लीवर में प्रॉब्लम है वो तो कोई भी ड्रग यानी गोक्षुर को या आंवला भी नहीं पचा पाएगा, खुराक भी नहीं पचा पाएगा। ये सिद्धांत जो समझेगा उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। मेरे गुरुजी बीडी नंदुरबारकर साहब, ये रिटायर्ड एज प्रिंसिपल अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज, और फिर बहुत शॉर्ट टर्म में वो चल बसे। नंदुरबारकर साहब अग्नितुंडी इतनी देते थे, सब लोग उनको जाके बोलते थे आप तो किसी को मार दोगे, लेकिन एक भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई साहब। ये बस इतना ही कहना था मेरे को। VATSANABH is a wonderful drug provided how you use it and in whom you are giving and when you are giving. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you. अग्निहोत्री जी। डॉक्टर थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा आपका इंटरवेंशन रहा और आपने पर्सनली जो यूज किए हैं उसमें 3-4 सेक्टर्स में और इंडिकेशन दे दिए, स्पेशली जो मैंने कर्तार्थव वगैरह रहा या लेडीज की डिजीज के मामले में, और योर कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद अग्नितुंडीवटी, आपका आरोग्यवर्धिनीवटी और चंद्रप्रभावटी कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट किया, इंक्लूडिंग द कीपिंग द साइट ओवर लिवर एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत अच्छा लगा। और इसी वजह से संजीवनी बटी के कितने सारे रोगाधिकार है। हम ज्वर पर देते हैं, अजीर्ण पर देते हैं, हम विसूचिका पर देते हैं और सर्पदंश पर देते हैं। इसके 1, 2, 3, 4 का जो कॉन्सेप्ट है, पलांडु सूरस के साथ में 750 मिलीग्राम की 3 संजीवनी बटी, जिसमें वसनाभ भी होता ही है, वो हम लोगों ने दिया। और सच में बता रहे, मैंने विसूचिका के केस में बद्रीनाथ जा रही थी टीम, उसके उनके एक टीम मेंबर को हो गया था और हमने उसको ठीक किया। डॉक्टर पार्श जी ने हमको रेफर किया था और उन्होंने ड्रिप भी नहीं लगाई, मैनेज किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था। तो इसमें कोई शक नहीं है। वसनाभ वाली संजीवनी बटी तो स्तुत्य नाम ही उसका संजीवनी है, तो वो संजीवन करती है, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। गलती को पकड़ना चाहिए। गलती ये है कि अगर टॉक्सिसिटी थी या उसको ओवरडोज में दिया गया है, उसमें कोई इम्प्योरिटी थी, उसने रिएक्शन किया है, तो थैंक गॉड से हम चारों लोग मेडिकल आयुर्वेद में थे, हॉस्पिटल के पास में थे और सब कुछ मैनेज होगा। और एक शॉर्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ, इसमें कोई दिक्कत वाली आती है। और अग्नितुंडी तो हम लोग हमेशा आम पाचन वगैरह के लिए हमेशा उदाहरण से देते ही रहे हैं, बड़ा अच्छी सी बात है। और डॉक्टर मल्लिकार्जुन राव साहब हैंड रेज कर रहे हैं, वो कुछ ऐड करना चाहेंगे। Yes, sir. I am here to add. उसके बाद मैं डॉक्टर तिवारी भी तिवारी जी बात कहना चाहता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट ऑल। आज अपनी 8:30 बजे दूसरी वेबिनार है, तो अपना डिस्कशन सेशन ओनली अप टू 8:25 यही लिंक रहेगी। पब्लिक अदर पर्सन्स विल ज्वाइन। Our one speaker has already joined. So from 8:30 second webinar, so discussion will be limited for 15 days up to 8:25 only. It is my humble request. We will be closing by 8:20 rather, because we have to not closing, sir. It will be continuing but not closing. No, closing means our discussion we would like to lead or control, cover our discussion by 8:20, so that 5-minute rushes must be there, 5 minutes interval must be there. So today is day 2 and Professor Kamlesh Kumar Sharma and Professor Ramdas PV will be guiding us on Charak Samhita today. Sure, sir. Sure, sir. So our Tiwari is very much here, and Dr. Mallikarjun, as a feedback, he might be interested to add on something. And then a few percent, Dr. C.P. Sharma is here, Domya Sahib is here. 3 minutes for all our great dignitaries. Just I want their concept also on today's very important topic. So we will just make a toss. Dr. Mallikarjun, if you finish your Yes, sir. Yes, please. Then Tiwari, yes, you are very much with us. I'll just invite you. Sir. Yeah, sir.
Thank you, sir, for giving me this platform for Yes, me. please. I want to share only one thing, that when I told that I had VATSANABH uprooted and I had the tuberous root, fresh root. It is not dried root, fresh root of one tuberous root I had, and I couldn't see any toxic effects explained in the text. I could feel only the palpitations and profuse sweating for 2 days. That's why we need not have any doubt on the VATSANABH preparations can be used even though it is a toxic one. And another thing I can tell about Sanjeevani Vati, as Agnihotri sir rightly said, it is Sanjeevani Vati, its title itself. Apart from this, VATSANABH is Rasayanam. Rasayanam will definitely counters all degenerative conditions like fibrosis. Any fibrosis, Rasayana Dravyas can definitely counters the degenerative conditions. With this, I conclude, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thanks for your inputs. Now, I would like to invite Professor Rakesh Kumar Tiwari ji, sir. And we are very much interested to have some insights from you, sir. Thank you, Please. sir. Thank you, sir. सर डॉक्टर प्रदीप जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ईच एंड एवरी कॉर्नर ही हैज टच्ड. और बाकी सब मैडम पारुल मैडम का और सभी लोगों के इनपुट्स भी बहुत अच्छे आए हैं सर. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था सर कि एक तो चरक में उल्लेख तो है, मूलज विषयों में गणना है इसकी, लेकिन लेटर ऑन रस शास्त्रियों ने ही इसका मेनली शुरू किया नागार्जुन के पीरियड में, और रसरत समुच्चय वाज दी बेस्ट वन, जो जिसने बहुत अच्छे से उसको एस्टैब्लिश किया इस ट्रक को. भावप्रकाश वगैरह तो बाद में हुए, लेकिन हाँ वहां से रसरत समुच्चय से बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो गया. डॉक्टर प्रदीप जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ड्रग्स के एक्शंस को. मैं बस सिर्फ इतना सा उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो है कि जो मदकारी है एक्शन, तमोगुण प्रधानम च मदकारी तदुच्यते, और इफ जुडिशियसली यूज्ड ये जो ड्रग है तो वो किसी भी प्रकार से मदकारी का कार्य नहीं करेगा. अगर वो ओवरडोज हो जाता है देन इट विल सर्टेनली डू इट, राइट. तो बस मदकारी इसके मामले में तमोगुण प्रधान, और वैसा तो है ही नहीं, ये ड्रग कफ को प्रकोपित तो करा ही नहीं सकता ना, तमोगुण को करा नहीं सकता इफ इनजुडिशियसली यूज. एक ही शब्द है उसके साथ. अब प्रॉब्लम क्या है सर? अच्छा, दूसरे इसमें दो गुण हैं जो व्यवायी और विकासी, उनके बारे में मैं जरा स्ट्रेस करना चाहूंगा. सभी विषय द्रव्यों में है वो वास्तव में, और इसीलिए वो उनको स्पेशल बनाते हैं. व्यवायी इज वेरी स्पेशल फॉर विद रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. व्यवायी और विकासी जो हैं एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की दृष्टि से विशिष्ट शक्ति संपन्न जो हम कहते हैं, वास्तव में इनको गुण की श्रेणी में रख देना चाहिए. वो ऐसा मैंने गुरुजी से, प्रोफेसर एस डी दुबे सर से कहा था, और उसी प्रकार उन्होंने पीवी शर्मा जी से भी कहा था. लेकिन पीवी शर्मा जी ने उस बात को मुझे समझाया, कहा कि ये इनकी व्यवहार मुख्यता नहीं है इनमें, इसलिए वीर की श्रेणी में इनको नहीं रखा जा सकता. अदरवाइज इट इज वो दोनों महत्वपूर्ण है. जो दो कंटेंट्स हैं इसके, एकोनिटीन और स्यूडो एकोनिटीन. ओनली स्यूडो एकोनिटीन इज वेरी पॉइजनस, वेरी वेरी पॉइजनस. और हम ये बस एश्योर करना है हमें कि किसी तरह से शोधन प्रक्रिया से हमारे ये स्यूडो एकोनिटीन तो कम से कम खत्म हो. वो जितना मिनिमाइज हो जाएगा उतना ही अच्छा है. द प्रॉब्लम इज कि हमारी जो शोधन प्रक्रियाएं हैं सर, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है कि हमने कह दिया कि उसको 3 प्रहर तक गोदूध से कर लेना है, उसके गोमूत्र में स्वेदन करके उसके बाद 2 प्रहर गोदूध स्वेदन से पानी से धो ले और इससे शुद्ध हो जाता है. दिस कंप्लीशन ऑफ शोधन प्रोसेस हैज नॉट बीन डिस्कस्ड, और इसके लिए हमको कुछ करना होगा. सबसे बड़ा हमारी ड्रॉबैक है, और वही कहीं ना कहीं शोधन प्रक्रिया में कोई वो उसके कंप्लीशन का कोई पैरामीटर हमारे पास नहीं है, वेदर इट हैज बीन शोधित, कंप्लीटली शोधन हो गया है या नहीं हो गया. सर बस मेरा इतना सबमिशन था. इस मामले में कार्य होना चाहिए कि ये 2 प्रहर गोमूत्र में और उसके बाद 3 प्रहर गोमूत्र में, उसके बाद 2 प्रहर जो है वो दुग्ध में स्वेदन करके और फिर उसको सुखा के और पाउडर पानी से धो के सुखा लेना चाहिए. उससे शोधित हो गया. क्या उसका स्यूडोकोनिटीन कंटेंट कंप्लीटली वो अंडर कंट्रोल आ गया है या नहीं? बस इतना सर मेरा सबमिशन था. सर वो उस दिशा में बहुत अच्छा. सर आपको एक बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस की है सर विनीत सर, कि हरिद्वार में इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ है. थैंक यू सर. आप 23-24 याद दिला रहे हैं. हाँ सर बिल्कुल 23-24 याद आती है आपको. बहुत सारा मैं देखा, मैं उसमें अनफॉर्चुनेटली सर पहुंच नहीं पाया सर,
मैं अच्छा। किसी वजह से। नहीं, वो कांवड़ मैं का था जरूर और रिजर्वेशन की प्रॉब्लम थी, काफी लोग आ गए हमारे 2 करोड़ प्रजापति जी साथ रहे सर और बहुत सारा सभी भगवान साहब सब लोग हैं। सर आए। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ये प्रक्रिया की, हाँ, शोधन प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, इसके लिए कोई पैरामीटर कैसे बने सर उसमें? बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने रखी, स्पेशली ये आपका इशारा मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की, जिससे कि औषधि की श्रेष्ठता और कार्मुकता बनी रहे और विषाक्तता दूर हो सके। पैरामीटर्स के अभाव में ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, अगर हो तब तो वो भी बहुत बड़ी आ बात है जाएगा। सर, उसको उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। We are trying to conclude parameters on TLC, Right, sir. SPTLC and TLC basis. Okay sir, thank you sir, thank you for giving me the time. Thank you. वेल, अभी इधर पिछले कई हफ्ते से हमारे आदरणीय डोमा जी नहीं, थैंक यू सर, हमारे आदरणीय डोमा जी नहीं। आज सर मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, आज आदरणीय अशोक कुमार दुबे जी जुड़े हैं, आज ही उनको कोरोना पॉजिटिव आया है। I salute him, his zeal, passion, really sir. He is Vishwa President Vishwa Ayurveda Parishad Bihar. Welcome sir. So I would like to invite. कहाँ जन समुदाय में जाके मिक्स हो गए, कहाँ से ले आए कोरोना? अब तो ये घर घर व्याप्त है। ये बहुत ही बताते हैं चरित्रहीन है, इसके कोई करैक्टर नहीं है, ये बहुत म्यूटेशन में चला जाता है, पता नहीं चलता है, सर्वव्यापी हो गया, भगवान के बाद इसी की स्थान है। तो समय से इसका निराकरण करिए और बुखार मत बढ़ने दीजिए, ऑक्सीजन लेवल ठीक रखिए और प्रोनिंग में रहिए, बस सब ठीक हो जाएगा। बाकी आपको क्या बतलाना, अब तो घर घर सबको चर्चा हो गई है। आपका बहुत बहुत हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं, आप जल्दी से सामान्य हो जाइए और बॉडी इम्यूनिटी आपकी अच्छी है, बॉडी इम्यूनिटी आपकी अच्छी है, इसीलिए आप लोगों के सामने आज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अपने में इस बात का सूचक है कि आपने बॉडी इम्यूनिटी को मत हिलने देना। वही हल्दी वाला दूध, और अब तो खैर चलो थोड़ा जैसा आप उचित समझो करें, हो जाएगा। और आप कुछ आज आप कुछ अपने आशीर्वचन भी दे दीजिए, आज बड़ी चर्चा हो गई, 2 घंटे हो चुके हैं, आपसे भी कुछ आप अनम्यूट कीजिए, अशोक जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू करीब करीब तो सभी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं और अब हमको आज बोलने में भी तकलीफ हो रही है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अपना वक्तव्य दूं। तो एकोनाइट जो है वो तो पॉइजनस है, पॉइजनस की शेड्यूल एक्चुअली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में तो स्पष्ट रूप से यह दिया गया है कि शेड्यूल E1 की जितनी भी मेडिसिन है, उस मेडिसिन को जो है व्यवहार करने के लिए लेबल पर जो है उसको डिस्प्ले करना जरूरी है कॉशन के रूप में, टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। ये देना जरूरी है ताकि आम जनता और जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों के भी ये दिमाग में ये बात आवे कि ये पॉइजनस है, चूंकि इसलिए जो है इसको एक सावधानी पूर्वक जो है इसका डोज जो है हम मरीजों को प्रिस्क्राइब करें और उसमें दें। तो इसलिए जो है मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है कि जो है आप अपने लेवल पे जो है वो कॉशन आप जरूर डिस्प्ले करें। ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल में ऐसा मेंशन है, तो ये ऑलरेडी है। दूसरी बात है कि अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो टेस्ट इसका जो पैरामीटर है एकोनाइट का जो है, तो उसमें आपका जो सूडो जो वो है आपका, तो उसका टेस्ट जो है हमारे यहाँ है उसका डिटेक्शन का, कि उसका कैसे हम उसको वेरीफाई करेंगे कि उसमें प्रेजेंस है कि वो खत्म हो गया है। तो है तो जरूर हमने कहीं देखा है, बट अभी हम इसको अभी एलेबोरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो है अभी हमारे कंसर्न बुक्स अभी हमारे सामने नहीं है, इसलिए जो है अभी उसको हम अभी प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग में है, हम कभी इसको डिस्कस करेंगे जब हम देख लेंगे अच्छी तरह से कि जो है उसमें जो है ऐसा टेस्ट के पैरामीटर में
दिया गया है और किस तरह से इसका टेस्ट किया जाता है, ताकि जो है वो ये आइडेंटिफाई हो जाए कि पॉइजनस जो सब्सटेंस है वो टोटली रिमूव हो गया है कि नहीं हो गया है। तो ऐसा है, हम लोग का टेस्ट में है टीएलसी एंड एसपी-टीएलसी के उपयोग से जो है वो हम लोग जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए पैरामीटर जो है बनाया गया है, और उसमें जो है वो है इस तरह की बात है। तो वो हम आपको आज तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी हम जो है जहाँ बैठे हैं वहाँ पर रेस्ट करिए अभी आप। किताब उपलब्ध नहीं है, लेकिन देख करके जरूर कर देते हैं। रेस्ट करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप रेस्ट करिए, आज अब गले बजाया जोर मत दीजिए। मैं डॉक्टर पवन शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मेरे पास थी। मैंने एक पिक भेजी है, एक पिक्चर भेजी है, प्लीज उसको आप डिस्प्ले करिए तो मैं अपनी बात 1 मिनट में खत्म कर दूं, फिर अगले हम वक्ता के वचन लेंगे, क्योंकि फिर आप दूसरे उसमें बिजी हो जाएंगे। डॉक्टर पवन शर्मा जी, हरिओम। आज का हमारा जो डिस्कशन वसनाभ पे चल रहा है, जैसे कि विद्वानों ने अपनी चर्चा की और बताया कि जहाँ ये एक तरफ महाविश्व में चरकाचार्य जी ने वर्णन किया, लेकिन इसके औषधीय गुण उसके बाद उसको दूषीकरण करने के बाद मिलते हैं, तो उसकी बहुत वैल्यू है। मैं एक चित्र आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैं 1978 में मैं बीएमएस में फाइनल ईयर में था त्रिशूल में, तो मैं माता जी के साथ में श्री बद्रीनाथ धाम के लिए चतुर्धाम की यात्रा पे गया था। वहां पर बद्रीनाथ जी से आगे जब माड़ा गांव जाते हैं, जहाँ पे बतलाते हैं कि श्री बद्रीनाथ जी की माता श्री का स्थान होता है, तो वहां पर ये जो आगे गणेश गुफा और आगे जाते हैं, तो जहाँ पर हम बैठे, मैं एक लड़का है विनय गर्ग, ये यूनियन बैंक में एम्प्लॉय था, मेरा सहयात्री था। तो हम लोग जहाँ बैठे हैं वो देखिए एक पत्थर है जिस पर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं। इसको वहां के गांव वालों ने सर्पशिला नाम दिया था, और बताते हैं कि ये उसके सर्प के फॉसिल्स के रूप में ये यहाँ पर इम्प्रेशन आया हुआ है। तो कहते हैं यहाँ पर सांप और सांपनी को जोड़े के यहाँ पर ये फॉसिल्स जैसे इम्प्रेशन है इस शिला पर। तो ये बतलाया गया था, ये किंवदंती है, कितना सच्चाई है, लेकिन ये आज के लिए रेफरेंशियल है कि एकोनाइटम की उपस्थिति, चूंकि बद्रीनाथ जी 10,000 फीट से ऊपर अवस्थित हैं, तो 10,000 फीट से ऊपर ही वसनाभ 10,000 से 13,000 फीट की हाइट पर पाया जाता है। और ये सर्पशिला वो स्थान है कि इसके ऊपर किंग कोबरा नहीं पाए जाते हैं, सर्प नहीं पाए जाते। तो ये अंतिम वो पत्थर, ये शिला दिखाई है, इससे इसका नाम सर्पशिला है। कहते हैं कि इससे ऊपर वहां पर सांप नहीं पाए जाते हैं, और यदि पाए जाते हैं तो वो पायोजेनस नहीं होते हैं, वो विषहीन होते हैं। तो ये उन्होंने बतलाने की कोशिश की थी, ये वसनाभ का क्षेत्र है, और उसकी फ्रेग्रेंस से ही यहाँ पर सांप यहाँ से चले गए हैं, नहीं होते। और अगर भी होते हैं, अगर वहां पर रहते हैं, इनहेल करते हैं, तो वसनाभ से आने वाले जो भी उससे पौधे से निकलने वाली जो महक है, उससे ये विषहीन हो जाते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेशनल लगा मुझे। मैंने कहा आज मौका है, इसको हमने जल्दी से दोपहर में ढूंढा है, तो इस पर वर्क किया सकता है, विचार किया सकता है। वहाँ के सारे हमारे तीर्थ यात्रा के पांडव लोग, वहाँ के ग्रामीण वाले ये किंवदंती बताते हैं। तो जहाँ पर हम बैठे हैं, हम दोनों लोग हैं, इधर वाले हम हैं, उधर विनय है, कि ये सांप का जो दिखाया गया, इसको सर्पशिला बोलते हैं। इसी के आगे फिर वो गणेश है, फिर जहाँ द्रौपदी जी बेहोश हो गई थी वो इलाका है, फिर और आगे आगे चलते चलेंगे। जी सर, माणा गांव का बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे इस यादगार को। चल रही थी अपनी मार्कर्स की सर। जी सर, जी अभी अपनी मार्कर्स की बात चल रही थी, तो मार्कर्स में देखिए, ये मार्कर्स की रिसर्च हुई है एकोनाइट के बिफोर शोधन, आफ्टर शोधन, दोनों मार्कर्स की टीएलसी टेस्ट हुई है। व्हाट इज इन क्रूड ड्रग, व्हाट इज इन केमिकल शोधन, एंड व्हाट इज इन आयुर्वेदिक शोधन। This research paper has been published in 213, sir. That means researches have been done. Unfortunately, we are not knowing that research, but in our industry, we are maintaining this TLC system for every poisonous drug, schedule E1 drug, because we have to keep record in laboratory for quality assurance also. So these TLC markers are definitely helpful to decide whether it is toxic after Sodhan or not. These are the markers, sir. And this paper is available on the net.
Anyone can see there. सर एक चीज बताइए, अगर शोधित है, अपूर्ण रूप से मार्कर के हिसाब से शोधित है, फिर भी क्या उसकी बाई मिस्टेक ओवरडोज में वो शोधित वत्सनाभ भी यदि एक संजीवनी बूटी की डोज में पहुंचेगा तो भी वो क्या पॉइजनस या कोई कॉम्प्लिकेशन इफेक्ट देगा? यस सर, इसमें नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए डोज के हिसाब से लिखा हुआ है। जी बिफोर शोधन 300 mg पर केजी बॉडी वेट में 20 मिनट में डेथ होती है। 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट में 35 मिनट में डेथ होती है। और 5 मिलीग्राम केजी बॉडी वेट में नो डेथ, क्रूड की बात कर रहा हूँ, बिफोर शोधन की। तो ये टाइम वाइम सब एक बार डिसाइड कर लिया गया है सर। अच्छा सर जी। तो फेटल डोज क्या होगी, बिफोर शोधन क्या होगी, आफ्टर शोधन क्या होगी, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड देयर इन रिसर्च। सही बात है, नहीं तो बिना उससे तो मैन्युफैक्चरर्स बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज का युग तो बहुत साइंटिफिक युग है, वहां तो गति ही नहीं होगी, आप प्रिपरेशन मार्केट में ला ही नहीं सकते बिना इन सर्टिफिकेट्स के। थैंक यू सर, वेरी इंफॉर्मेटिव। मेरे ख्याल से हमारे वैद्य पारुल जी और प्रदीप जी और मल्लिकार्जुन सभी लोग, सभी हम सबके लिए इंफॉर्मेटिव हुई कि ये पैरामीटर्स और टेस्टिंग की तो सर्टिफिकेट या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो चुका, मतलब ये तो प्रिंट हो चुका, पब्लिश हो चुका है। यही गाइडलाइंस हम समझते हैं सभी मैन्युफैक्चरर के लिए। फॉलो हो रहे हैं सर, इसको कोई मॉनिटर कर रहा है या नहीं सर? गाइडलाइंस फॉलो हो रही, मॉनिटर हो रहा है या नहीं सर? यही बस एक नहीं, प्रॉब्लम क्या है सर, ये गाइडलाइंस ट्रेड सीक्रेट है, बड़ी कंपनियां इनको शेयर नहीं करती। जो हम कर रहे हैं वो दूसरा करने लगेगा तो फिर वो ट्रेड सीक्रेट ही खुल जाएगा। ये गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है एक्चुअली। मॉडर्न साइंस में ऐसी गड़बड़ नहीं है, 100% फॉलो होना चाहिए सर। जी हाँ सर, जी हाँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग सच ए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। कामिनी मैडम कुछ बोलेंगे? डॉक्टर कामिनी धीमान जी, वत्सनाभ के विषय में आपके उपयोग और आपके ऑब्जर्वेशन। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी। मैं दो ही लाइन बोलूंगी जो मैंने ऑब्जर्व किया था। मैंने कोइंसिडेंटली देखा था कि एक पेशेंट को त्रिभुवन कीर्ति रस दिया हुआ था और उसने काफी समय से ले रही थी, उसने बंद भी नहीं किया। एंड उसमें उसको हुआ स्टिफनेस इन सर्विक्स, मतलब गर्दन में उसको स्टिफनेस हो रही थी सर्वाइकल एरिया में। और उसकी आंख एकदम से जैसे होता है ना कि डस्टी डस्टी आईज, ऐसी इस टाइप की आईज हो गई थी उसकी। तो ऐसे ही उसने और प्रॉब्लम के लिए आई थी, तो मुझे बोला कि मैडम मेरी आंखें ऐसी सी देखिए कैसी हो गई, और गर्दन में थोड़ी सी मुझे अकड़न हो रही है। तो साथ में फिर मैंने देखा और कोई मेडिसिन चल रही है क्या, तो कई चिकित्सा डिपार्टमेंट से उसकी ये त्रिभुवन कीर्ति चल रही थी और कंटिन्यूअसली वो ले रही थी। फिर हमने उसको बंद कराया और बोला कि ये आप बंद कर दीजिए। एंड ये एक मैंने कोइंसिडेंटली देखा था। फिर बाद में हमने एक्सप्लोर किया तो इसके साइड इफेक्ट में बताया हुआ है कि ये लेने से होता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया था अपने पेशेंट। थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑब्जर्वेशंस। थैंक यू कामिनी जी। Is there anybody? Vishnu Priya ji from Goa. Welcome, welcome. Your voice is not coming. Hello. Experiences on Vacsanabh. Hello. Yes, your voice is coming now. Yes, sir. Yes, your voice is coming, madam. Audible. Yeah, it is very effective one, but as usual, your that aspect is still floor. We need to some way to maintain the quality, and that's the reasons why we get push back from other system of medicines. So